Task 3 of question number 4. You have highlighted from your interview with Java Perea and from your notes on the middle management focus group meeting that there are some key stakeholder management and engagement issues at DCS company. You are now preparing working notes with relevant visual aids, which will form a key part of your presentation of the overall consultancy report. Evaluate how the relative power and interests of the following three stakeholder groups and the strategies for engaging with them should have changed after DCS company became a public limited company. ओके, यहाँ पे मैंने कुछ ऊपर पैराग्राफ दिया है क्या? ये कुछ तो है. Having read the integrated reporting data and studying transcript of the conversation you had with Java Perea, you needed more background information about some of the key issues which had come to your attention. You therefore invited a representative team of middle managers to focus group meeting and ask them key questions from which the following comments were noted. Quote 1 from a management accountant in the finance directorate. When undertaking capital investment appraisal, we have a strict policy of evaluating investments or projects over a maximum of 3 years and to ignore cash flows beyond that date to ensure that the investment we must pay back with the time period. This ensures that we do not accept unviable projects. Or quote 2 from an engineer in the network supply division. What really annoys me is the fact that in 2011, the CEO and HR director introduced an annual staff survey. Although they promised anonymity, मतलब basically जब ये लोग स्टाफ सर्वे कर रहे थे तो इसमें इन्होंने बोला था कि हम ये बात किसी को बताएंगे नहीं और नहीं एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन तुम लोग हमें भेज रहे हो वो एनोनिमस रहेगी कि हमको पता नहीं चलेगा कि हम इन्फॉर्मेशन किसने भेजी है. The survey required us to give details of our age, ethnicity, and length of service and department in which we were employed. तो कहाँ से एनोनिमिटी वेंचो? अगर ये सब इंफॉर्मेशन दे रही है तो वहां पे एनोनिमिटी आती ही नहीं है. I was called to a meeting last year by the production manager who implicitly threatened me and made comments such as, if you don't like working here, why not look for another job? It was made very clear to me that this meeting was private and was to be kept confidential. I was not permitted to discuss the existence or outcomes of these meetings with other members of the staff, or there would be consequences. With I quote 3 from a technician in the data communications components division. I felt the staff satisfaction survey was designed in a way which dissuaded negative feedback and key issues known to be of concern to staff obtained from the informal grapevine were deliberately omitted from the survey questions. In addition, the way the results were presented by managers and the visual graphics used seemed to play down on negative feedback and concentrated on only on the positive factors. फॉर एग्जाम्पल एम्फोसिस वो अच्छा मतलब जब ये लोगों ने फीडबैक्स लिए कस्टमर से क्या सॉरी अपने एम्प्लॉयज से कस्टमर से जो जिनसे भी स्टाफ ना तो स्टाफ से तो इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक्स ही दिखाए थे और नेगेटिव फीडबैक्स को कंसिडर ही नहीं किया था. Emphasis was made on how well the staff regarded their own performance and that of their team members, which seemed to have more favorable feedback compared with other questions about confidence in the leadership of the company. I don't think this presented the true picture of our feelings. ठीक है. But a quote 4 from the sales support engineer. We are rushed off our feet due to key staff leaving. Our sales areas are getting larger and it is difficult to get around to all our customers. This means we have difficulty getting our orders on time and are often late to appointments. Although sales productivity might be improving because fewer of us are covering a greater geographical area, customers are not as satisfied as they used to be and are making more complaints. तो मतलब हम लोग जैसे जैसे तैसे करके संभाल तो रहे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन फिर भी जो है कस्टमर्स हमारे लाइक कंप्लेंट ज्यादा कर रहे हैं. After this meeting, you went back to your office and scheduled a meeting in the following week with Danny and Freddie to start preparing the consultancy report findings for DCS company. ये ठीक है. ठीक है.
ठीक है। क्या है सबसे पहले तो देखो, ये हमें नीचे बात करनी है वो 10 मार्क के लिए, विच इज फाइन। अभी के लिए मुझे इवेल्युएट करना है हाउ द रिलेटिव पावर एंड इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेक होल्डर्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर एंगेजिंग विद देम शुड हैव चेंज आफ्टर शेयर डीसीएस कंपनी बिकेम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और सबसे पहली बात तो शेयर होल्डर्स, ठीक है। Firstly, being a private company, the key shareholders would have been the equity investors who were investing in the company, and it was the idea to act in the best interest और वो wealth provide करना वगैरह वो सब। उसके बाद अभी जब ये लोग पब्लिक हो गए तो ये लोग गवर्नमेंट है। पावर रिलेटिवली ये है कि देखो, बेसिकली एक मिनट, इवेलुएट हाउ द पावर। तो यहाँ पे अगर हम लोग मेंडलोज मॉडल लगाए तो ज्यादा बेटर होगा। इन अकॉर्डिंग टू मेंडलोज मॉडल, once the switch is about to take place, the shareholders, one of the key stakeholders, are the key players, as they have high power and high interest in the company, and they should have been ठीक है ना। वो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ज्यादा प्रोवाइडिंग फाइनेंस। और जैसे ही इन लोग को पता चलेगा कि ये कंपनी पब्लिक हो रही है, उन लोग को शायद अपने पैसे निकालने रहेंगे। अभी जब ये लोग कंपनी स्विच करेंगे टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो फिर क्या हो जाएगा, इनके जो शेयर होल्डर्स है वो बन जाएंगे गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट की स्टेक होल्डर बन जाएगी। एंड पब्लिक एट लार्ज, कहने की कस्टमर्स वगैरह ये इनके ज्यादा बन जाएंगे। लेंडर्स के लिए भी और एम्प्लॉय, अभी देखो एम्प्लॉयज जो है इनके इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहते। इनके इंटरेस्ट क्या रहते नहीं, इनके पास पावर नहीं रहती। इनके पास पावर नहीं रहती, लेकिन इनके पास इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि ये दीज आर द पीपल हु हु क्या आता है इनके, बेसिकली इनको इंटरेस्ट में इनको सैलरी वगैरह मिलती है ना। So these are the ones who should have kept informed, because after being a public limited company, if there were any salary cuts taking place, then these employees who could have had the opportunity to switch the company, ऐसा अपन लिख सकते हैं। या फिर कुछ एम्प्लॉयज को ऐसा भी हो सकता है कि शायद कि भले ही सैलरी थोड़ी कम हो रही है, बट ये लोगों को जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, ऐसा इनको अच्छा लगेगा, है ना। फिर आते हैं लेंडर्स। लेंडर्स आर द वंस हु प्रोवाइड इनकम, सो हु प्रोवाइड मनी टू द कंपनी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और सॉरी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ही लिखते हैं, शॉर्ट लॉन्ग नहीं लिखते, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। After being a public limited company, there would have been significant doubts over the lenders that whether or not the company would pay them back or not. अच्छा, और वो मेंडलोज मॉडल के हिसाब से these are the ones who should have kept satisfied। हाँ, these are the ones who should have kept satisfied, ऐसा 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 मुझे लगता है। ठीक है। There could be a situation that now that DCS company is becoming a public limited company, the lenders could be government. Government it itself can provide grants and become the lenders, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वो लिखना स्टार्ट करता हूँ इस आंसर को, देन लेट्स सी। आई रोट दिस आंसर, मैंने इतना आंसर लिखा। शेयर होल्डर्स के बारे में एक कॉलम, एम्प्लॉयज के बारे में ऐसे, और देन लेनर्स के बारे में ऐसे। मैंने कंपेयर्ड विद देम, हाउ हैव दे डन इट, उन्होंने पैराग्राफ वाइज ऐसे लिखे है, लेकिन उसके पहले ना उन्होंने बिफोर फ्लोटेशन एंड आफ्टर फ्लोटेशन ऐसे उन्होंने दो कॉलम्स बनाए हैं। and उन्होंने मेंडलोस ग्रिड के हिसाब से उन्होंने देखो यहाँ पे ऐसे परफॉर्म किया है। बस मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखी है। So using the Mendelov matrix, it can be established that before DCS was listed or quoted on the national stock market, it had the following stakeholder groups. Before quotation, it had shareholders, बराबर है। अभी ये क्या थे, described as follows. These are the private shareholders comprising of, तो ये मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये मैंने फैमिलीज के बारे में नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे एसोसिएट्स के बारे में लिखा हुआ है। एम्प्लॉय के बारे में मेनली अनयूनियनाइज, नॉन यूनियनाइज्ड एंड लॉयल टू दी smaller family oriented business lenders, significant borrowing before flotation, presumably overdraft or the other short term loans. आफ्टर फ्लोटेशन क्या होगा, शेयर होल्डर्स में वाइडर ग्रुप ऑफ पब्लिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड 30% होल्डिंग बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉयज के केस में चाहिए, एम्प्लॉयज जो है ना यहाँ पे नहीं आना चाहिए था,
जैसे आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एम्प्लॉयज यहाँ पे आएगा। एंड देन एम्प्लॉयज में क्या आता है, एम्प्लॉयज आर मोर स्किल्ड स्टाफ बट ऑपरेटिंग कोर स्टाफ मोस्टली अनयूनियनाइज्ड, नो, हाँ अनयूनियनाइज्ड, ठीक है। एक मिनट, अनयूनियनाइज्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं? स्टाफ में मोर स्किल्ड स्टाफ बट ऑपरेटिंग कोर स्टाफ मोस्टली यूनियनाइज्ड, माय बैड, मोस्टली यूनियनाइज्ड। लेंडर्स में क्या आता है, मच मोर पावरफुल एंड इंटरेस्टेड, गियरिंग, हायर गियरिंग एंड कोवेनेंट्स इन प्लेस, ठीक है। तो अब मुझे देखना है मैं जो मेंडलो मॉडल यूज किया है उसके केस में मैंने बराबर किया है कि नहीं। शेयर होल्डर के केस में हाई पावर हाई इंटरेस्ट मैंने वो बराबर किया हुआ है। एम्प्लॉयज के केस में लो पावर हाई इंटरेस्ट ये भी सही किया हुआ है। ओके, लेंडर्स के केस में मैंने हाई हाई किया था, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, जो मेरे को लगा था कि लेंडर्स जो है वो ज्यादा मतलब कभी भी अपने से पैसे मांग सकते हैं एंड दे हैव द बेनिफिट्स ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, प्लस लिक्विडेशन के टाइम पे उनको सबसे पहले पे किया जाता है, तो मैंने ऐसा लिखा है। मेंडलोस ग्रिड पोजिशन एंड स्ट्रेटजी आफ्टर फ्लोटेशन में, अच्छा मैंने ये बाइफरकेशन नहीं किया बाय द वे, बिफोर एंड आफ्टर में, मैंने खाली बिफोर के बारे में लिखा हुआ है। आफ्टर फ्लोटेशन में लो पावर हाई इंटरेस्ट, एम्प्लॉय के केस में हाई पावर हाई इंटरेस्ट हो जाएगा, और लेंडर्स के केस में हाई पावर हाई इंटरेस्ट, कीप वेल इन्फॉर्म्ड एंड कीप सेटिस्फाइड। हाँ मैंने ये लिखा हुआ है, कीप वेल इन्फॉर्म्ड एंड कीप सेटिस्फाइड, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे बस वो स्प्लिट नहीं किया है उन दोनों को, ऐसे बिफोर एंड आफ्टर में। फिर आते हैं एक एक करके यहाँ पे, एक मिनट सबसे पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट। ग्रिड पोजीशन बिफोर फ्लोटेशन, बिफोर फ्लोटेशन बंदी के पास बहुत ज्यादा पावर थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एम्प्लॉयज के पास कम पावर थी लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा था, क्योंकि उनके पास उनको उनको वो सैलरी वगैरह मिलती थी। लेंडर्स को क्यों इतना कम है, मुझे समझ में नहीं आया। लेंडर तो पैसे दे रहा है, उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और उसको लिक्विडेशन के टाइम पे सबसे पहले पैसे दिए जाएंगे, आई डोंट नो व्हाई। लोअर पावर हाई इंटरेस्ट हो जाएगा, कीप इन्फॉर्म पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। अच्छा, इस केस में लो पावर क्यों हुआ है? बिकॉज ये लोग शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स में इंटरेस्ट तो ज्यादा हो गई लेकिन उनकी पावर कम हो जाएगी आफ्टर दे आर मेड पब्लिक। एम्प्लॉइज हाई पावर हाई इंटरेस्ट कीप सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयज को खुश रखना चाहिए और इन्वॉल्व मोर एक्टिवली। पता नहीं, हाई इंटरेस्ट तो है एम्प्लॉयज का क्योंकि ज्यादा स्टेट पेंशन मिलेंगे, एक फिक्स सैलरी होगी, जॉब सिक्योरिटी, हाई पावर कैसे आ जाएगी एम्प्लॉयज के पास? आई थिंक ये सब नीचे एक्सप्लेन किया हुआ होगा। लेंडर्स के पास हाई पावर हाई इंटरेस्ट, ये मुझे लगा था, लेकिन ये मुझे प्री फ्लोटेशन लगा था rather than आफ्टर फ्लोटेशन, ठीक है। ये क्या ऊपर कुछ लिखा है, द स्ट्रेटजीज डीसीएस कंपनी मैनेजमेंट वुड अडॉप्ट प्री एंड पोस्ट फ्लोटेशन would differ as determined by the change position on the Mendelov matrix. The main change in strategies would be as follows in relation to the above stakeholders. To the above stakeholders, ठीक है। Shareholders. Clearly, before flotation, private shareholders, being the owner and his family or close friends, would have far more interest and power than the majority of shareholders after flotation. So the need to actively involve is less necessary, but the evidence from the case suggests that there is lack of engagement which institutional shareholders would which institutions with institutional shareholders which could be problematic as the group has far more power than the other shareholders. So DCS should develop reporting and communication channels with this important group, ठीक है। शेयर होल्डर मैंने फिर भी ठीक ठाक लिखा हुआ है। एम्प्लॉयज बिफोर फ्लोटेशन, मोस्ट एम्प्लॉयज वेर अनयूनियन नॉन यूनियनाइज्ड, non-unionized, not unionized, she by non-unionized, and the culture of DCS was not to involve, engage, or inform employees and expect them to follow instructions. After rotation, 60% of data communications workforce are now unionized, and the additional employment legislation, such as minimum wage and mandatory company pensions, are being introduced which will force DCS to not only keep employees and their representatives informed and fairly well satisfied, but also to more actively involve them in particular regarding the pension arrangements. अच्छा तो ये 60% के बारे में कहीं दिया हुआ है क्या?
हम्म, पता नहीं, मेरे को तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हाँ ये रहा। Since the flotation, the company 60% of the production employees in the data communication components and factory join major trade। ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ तो अगर ये चीज हो जाएगी तो एम्प्लॉयज के हाथ में पावर तो आ ही जाएगी ना फ्लोटेशन के बाद। मेक सेंस। ये प्री सीन की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है। Lenders. Before flotation, DCS was predominantly funded from shareholder funds and had few borrowings. So these stakeholders had little okay. तो प्री फ्लोटेशन डीसीएस के, मैंने आई थिंक मैंने बहुत जेनरिक इंफॉर्मेशन लिखी है रिगार्डिंग लेंडर्स की। लेंडर्स के पास हाई पावर और हाई इंटरेस्ट होता है इन जनरल मैंने लिखा है। लेकिन डीसीएस के केस में डीसीएस ने उतने फंड्स उठाए ही नहीं थे लेंडर्स से। इसीलिए इसीलिए उनके पास लो पावर और लो इंटरेस्ट थी। So stakeholder had little power or influence and possibly little interest in DCS, particularly if the loan capital represented a significant proportion of the lender's total portfolio. After the flotation, DCS has become increasingly more highly geared in order to expand into new markets, and therefore the risk faced by the lender is greater, and it increases the lender's level of interest in DCS and the ability to sustain this level of borrowing and to repay the original capital, as lenders have placed legally binding covenants on the company, preventing it from exceeding its current gearing levels. It also has more power over DCS. It also has more power over DCS, meaning that DCS will have to keep lenders well informed and certainly keep them satisfied। हाँ ऑब्वियसली तो ये सारी चीजें इनको करनी पड़ेंगी बिकॉज अभी लेंडर्स के हाथ में ज्यादा ज्यादा पावर आ रहा है बिकॉज वी आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम देम एंड लुकिंग एट अवर करंट पोजिशन दी वी आर गेटिंग हाईली गियर्ड, तो इसकी वजह से वो द रेट ऑफ रिटर्न आस्क्ड बाय देम वुड बी हायर। मेक सेंस। आगे, assess the CEO and HR's ethical HR related ethical and professional behavior relating to the design, conduct, and reporting of the staff satisfaction surveys. Okay, मैडम यहाँ पे हाँ ये रहा। देखो, firstly, having read the integrated reporting data and studying the transfer of conversation with Java Korea, तो ये देखो, लेट्स तो हम ना ऐसे इनको इसके आंसर की शुरुआत करते हैं। From the quote one, from management accountant in the finance directorate, ठीक है। When undertaking capital investment appraisal, we have a strict policy of evaluating investments or projects over a maximum of 3 years and to ignore cash flow beyond that date. To ensure that any investment we must pay back to ensure that any investment we must pay back within that time period. This ensures that we do not accept unviable projects। ये वाला कोड ठीक है आई थिंक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक्चुअली। और वैसे मुझे सी और एचआर के बारे में बताना है ना, तो यहाँ पे तो ये आता ही नहीं है एक्चुअली। कोड टू, फ्रॉम एन इंजीनियर इन द नेटवर्क सप्लाई डिवीजन। देखो, by looking at the code 2 from the engineer in the network supply division, we can see that when the that the CEO and HR director had introduced an annual staff survey and had also promised the anonymity for the same, that is whoever whichever individuals writes the feedbacks for the company, it will be kept anonymous, and that person would not be located or detected। However, when we look at the survey, sorry, when we look at the details which the employees had to fill in the survey, we can see that there were criteria of age, ethnicity, length of service, and department in which it were employed। Therefore, there were clear, therefore, how come the anonymous or how come the anonymity was maintained is still a question, because by
By looking at the age, ethnicity, length of service, and the department in which the people were employed, or the employee was employed, the person could have been narrowed down and could have been easily found out by the CEO and the HR director. Thus, the fact that the statements given by CEO and HR that there was anonymous that sorry or the promise of anonymity being made cannot be sustained or cannot be maintained. This raises certain serious questions regarding the integrity, objectivity and professional behavior of the CEO and the HR director. और आंसर भी हम ऐसा करेंगे कि while operating in an environment वो तीन चार कोड्स को फॉलो करना चाहिए. uh, Secondly, when it came, when once the individual was identified, uh, it was called to, once the engineer was identified in the network supply division, he or she was called, he, है ना? Okay, ठीक है. He or she was called in the meeting last by the production manager, and a threatening and the fact of threatening was done. इसको कैसे लिखूं मैं? He or she was threatened in order to like his or her job. कैसे लिख सकता हूँ मैं इस आंसर को? Intimidation. Actually इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि thus an intimidation threat was given to the engineer in the network supply division that if he or she did not like the job, then he or she will be fired from the job position. Thus a kind of forceful uh, force thus the acts of forceness were done. पता नहीं इसको कैसे लिखूंगा, I don't know. It was made very clear to me that this meeting was private and was to be kept confidential. ठीक है. I'm from a technician in the data communication components division. I felt like staff satisfaction survey. Also, when it came to responding to the feedback, to the negative feedback and acting upon it, it was mentioned by the technician in the data communications components division that the negative feedbacks and the key issues known of concern, which were obtained from the staff, were not even क्या बोलते हैं, disclosed or were not even talked about in the meeting. The more attention was provided towards the positive feedbacks, and thus a clear picture was not provided in the meeting at all. The emphasis was made on how well the staff regarded their own performance and that the team members, which seemed to have more favorable feedbacks compared to questions such as confidence और वो सब तो ठीक है. Secondly, जब वो की स्टाफ छोड़ के जा रहे थे, there are lack of staff who are able to conduct. So there's no attention has been paid on the fact that key staff have been leaving and the sales area have had to work harder in order to get around to all of the customers. The sales productivity has been improving, but that is not because of the actual quality of work. That is only because of the fact that lesser number of employees have been taking on more opportunities or more responsibilities and would have to work under pressure. ये अपन बोल देंगे, ठीक है ना? इतना सब सबसे पहले बोल देते हैं, और 10 मार्क के लिए तो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक बोलना चाहिए. मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, देन वील मीट. तो देखो ये इतना मैंने आंसर लिखा एंड उसके पहले मेरा टाइम खत्म हो गया, सो मैंने ये तीन आंसर, ये 3 पॉइंट लिखे. 4 पॉइंट मैंने वो लिख नहीं पाया. So these were the only 3 points that I was able to write, which involved threatening the employee, promised anonymity of the survey. इसको थोड़ा सा ज्यादा खींचा मैंने. सेल्स स्टाफ प्रेशर, इसको मैंने एक्चुअली कॉपी पेस्ट किया, उसके अंदर मैं खाली एडिशन करता चला गया, इग्नोरिंग द नेगेटिव फीडबैक्स.
इसके अंदर मुझे एक्चुअली और कुछ चीजें डालनी थी कि द recruitment and selection of the employees should take place, or the sales staff should take place. The the selection should take place for the sales staff as soon as possible. ऐसा, ठीक है, इतना मैं लिख देता हूँ अभी। लेट्स सी, उन्होंने दो तीन और पॉइंट्स ऐड किए होंगे। ओ दे हैव, okay, they have used the professional and ethically. There are some issues relating to how the staff satisfaction search survey has been conducted. So they have improved lack of integrity, lack of objectivity, ऐसा बोला है। मैंने भी बोला है ये सारे पॉइंट, लेकिन मैंने इन पॉइंट्स के अंदर बोले, which is also fine। ये देखो, this raises questions on the integrity and objectivity of the CEO and HR director, ये सब ऐसा ऐसा करके मैंने बोला है। In theory, which such surveys are beneficial to the organization and so staff is and to staff if conducted properly, as they help management gain a better understanding of how staff are thinking, what their attitudes and opinions are, and can act as a soundboard from which management can act, make the necessary changes which can improve the culture and productivity of the staff. Lack of integrity. Unfortunately, it appears that staff may have been misled in Hawaii, in that there were assurances given that the survey responses would be anonymous, but the personal information required gives the impression to the staff that management can identify the respondents of the survey. फिर आता है lack of objectivity. From discussions with the staff representatives, it is possible that key areas known to be of concern to staff obtained from the informal grapevine may have been omitted from the survey, and the survey could have dissuaded people from giving negative feedback, particularly about confidence in the management. From a statistical perspective, the results were presented in quite a subjective way by which graph styles, हाँ तो ये इन्होंने यहाँ से लिया हुआ है फ्रॉम द थर्ड फीडबैक, जो मैं एक्चुअली कवर नहीं कर पाया, ये वहां से लिया हुआ है। which may have been presented the true findings focusing more on the aspects which staff found more positive। मैं ये लिखने वाला था और उसके पहले वो टाइम खत्म हो गया, सो आई जस्ट स्टॉप्ड। मैंने ये फोर्थ पॉइंट लिखा एंड देन आई स्टॉप, ऐसा हो गया। Further, professional competence and due care, the design of the survey and the way in which results were presented may be viewed as being somewhat unprofessional and may not have uh, achieved what it was intended to achieve. This could have been avoided if more care had been taken with its design। तो मैं एक्चुअली इसको कंक्लूजन पॉइंट बनाने वाला था, which states by stating कि देयर इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, उनके बारे में जो सीईओ एंड एचआर डेटर में नहीं लग रहा कि है, ऐसा मैं बोलने वाला था। Confidentiality, one matter of serious concern relates to the fact that some employees were identified and interviewed by senior managers as a result of their apparent negative responses to the survey. This action appears to have breached the fundamental principle of confidentiality। ठीक है, इसके ऊपर देखो ना, इसके ऊपर कितने सारे बड़े बड़े लाइन लिखे, इधर एक खाली ये इतना सा लिखा है। नॉट मतलब इतना मेरे को सेंस नहीं बता रही कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रोफेशनल बिहेवियर, ये तो है कि ये तो बहुत ज्यादा ब्रीच हुआ है। डीसीएस कंपनी मैनेजमेंट शुड नॉट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई डिसिडेंट स्टाफ or schedule and conduct interviews with these individuals, as it could be described as demonstrating unprofessional behavior. It is partly worrying when some interviewees perceive that they have been intimidated or even threatened by the comments made at some of these meetings. Another point which we would wish to raise is the danger of operating double standards when the survey was supposed to be anonymous, but staff identified for interview were themselves required to keep confidential the act that they had been identified and interviewed। तो ये मैंने प्रोफेशनल बिहेवियर का ना यहाँ पे कवर किया हुआ है। It was not a professional behavior on part of the CEO and HR director. This is clearly an intimidation threat where jobs of the employees are threatened। ऐसा करके मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। I've just named the issues। They have named the ethical code of ethics, ACCA code of ethics ऐसा।